अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर अल्ताफ़ है, शायद कुछ लोग ना जानते हो। सो आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट विद फैमिली एंड ऑक्यूपेशनल मेडिसिन। मेरा जो कोर स्पेशलिटी है दैट इज़ ऑक्यूपेशनल मेडिसिन। सो बट दे आर पुटिंग मी इन फैमिली मेडिसिन, आई एम वर्किंग। आज की जो प्रेजेंटेशन है वो है आप लोगों को टू गिव यू अ फ्लेवर ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। वी आर नॉट गोइंग टू हाईलाइट मैनेजमेंट ऑफ सर्टेन पर्टिकुलर डिजीज बट ओवरऑल व्यू। Most of our colleagues here, they think occupational health or occupational department is some sort of occupational therapy. They are linked with the physiotherapy department. So that's why I think I have this opportunity to explain to you guys what actually occupational health is. So ये हम करेंगे, कुछ थोड़े से केस मैंने डाले हैं, उसके बाद what is occupational health, what is etiology and how we will manage. 34-year Malay male, no known medical history, operator at PVC stabilizer manufacturing industry for the past 3 years. इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, PVC बाद में, इसको केस आपको बता के। Presenting at GP clinic with generalized weakness and lethargy. On examination, anemia, chest pallor, no other significant findings. Hemoglobin found 9.6 and stool occult blood positive. Further investigation, examination showed bleeding internal piles. So it was assumed that anemia was a result of bleeding from the piles. So surgeon, Dr. Arsha, treated and sent back to the GP. Okay, give him iron supplement whatsoever. Again found anemic on subsequent visit for 3 months, and then GP referred this case to occupational medicine. Occupational history revealed that he is exposed to inorganic lead. So lead is a metal that causes anemia. So lab confirmed elevated blood levels 400 microgram per liter as well as urinary aminolevulinic acid. So final diagnosis was made anemia due to piles and inorganic lead. Okay, जो उसका जॉब था PVC स्टेबलाइजर, उसमें ना कुछ ऐसे केमिकल्स यूज होते हैं जिसमें लेड होता है। तो he was exposed to lead at the workplace, and this anemia was actually maybe due to piles early, both piles and lead, but once piles treated, there was no other reason other than lead. So removed from further exposure, oral iron, folate and vitamin D, in 3 months everything settled. Hemoglobin went up. लेड कैसे करता है, ये 3-4 प्रोसेस हैं उसके। सो इनहिबिशन ऑफ द हीम सिंथेसिस एट द लेवल ऑफ रिथ्रोपोएसिस। क्या होता है सर, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हीम ब्रेकडाउन को ट्रिगर करता है। लाइफ स्पैन आरबीसीज का, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन, उसकी मेम्ब्रेन है जो उसको फ्रेजाइल करता है, मे बी ऑस्मोटिक प्रेशर उसका इंक्रीज होता है तो वो फ्रेजाइल हो जाती है, तो रप्चर हो जाते हैं। ग्लोबल चेन की सिंथेसिस को इंटरफेयर करता है। And on top of that, lead is a potent cause of constipation. So constipation itself trigger piles. Am I right, sir? Similarly, एक केस ऐसा ही मैंने अभी कोई यहाँ आने से पहले मुल्तान में देखा। एक मेरे जानने वाले का था, ही वॉज 35-40 ईयर्स ओल्ड यंग मैन। सो सेम उसको अनीमिया का जो रूट वो नहीं पता चल रहा था। ही वॉज वर्किंग इन प्रिंटिंग प्रेस। सो प्रिंटिंग प्रेस में यू हैव सीन एम्बोस्ड प्रिंटिंग, वो जो उभरी हुई होती है, थोड़ी सी प्रिंटिंग होती है ना, जो
वो जो उस पर यूज़ किया जाता है ना, जो पाउडर, उसमें लेड होता है। हिज जॉब वाज टू सी द क्वालिटी, हर उसको जो जो होता है, जो वो पेपर होता था, उसको हाथ के साथ फील करके उसने चेक करना था। तो ही वाज एक्सपोज टू लेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वर्क। अब इसमें एक मले मैंने लिखा है, जो मले, ये जो पहला केस है, ये एक्चुअल केस है व्हेन वी आर इन सिंगापुर। तो हमने फिर ये किया कि वी कॉन्टेक्टेड द इंडस्ट्री कि आप सबका आप करवाएं, एंड देन वी फाउंड दिस अनीमिया इज ओनली प्रिवेलेंट इन मलेस, not in Chinese, not in Filipino. So when we dig out, मले जो है उनकी ट्रेडिशन है वो हाथ से खाना खाते हैं, तो चाइनीज जो स्टिक्स यूज करते हैं तो वो उनको लेस लाइकली वो चांसेस थे। सेकंड केस 39 ईयर फीमेल हॉस्पिटलाइज्ड विद फॉर एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा। इट वाज हर फर्स्ट एडमिशन फॉर द अस्थमा। शी स्टार्टेड हैविंग सिम्पटम्स ऑफ कफ, ब्रेथलेसनेस एंड wheezing about 6 months. Had history of allergic rhinitis but no asthma. Attacks were nocturnal and with improvement on days off. So when she was on maternity leave for 2 months, no attack of asthma during that period, or even the day she is off from the work. On detailed occupational history, her job was to supervise the finishing process in the manufacturing of wooden door. Wooden door जो होते हैं ना, वो जब बनते हैं तो उस पर देखा सरफेस में कुछ सुराख, कुछ अनइवन, कुछ जो लकड़ियाँ मिला, उसको वो फिलर होता है कि उससे उसको भरते हैं। फिर उसके बाद वो जो सैंड मशीन होती है, रंदा बोलते हैं शायद उसको, उससे फिर वो, उसका जॉब ये था कि टू चेक द क्वालिटी, उसको फिलर भरना, देन टू डू सैंडिंग जॉब। उसमें होता था साइनो एक्रिलेट्स, दैट इज पोटेंट asthmogenic. So she monitored her PEFR for 3 hours for total of 3 weeks. Every 3 hours, inclusive of 1 week, she was resting at home. So record shows normal during week at home and showed asthmatic pattern when she was on work. Specific bronchial provocation test for this glue was carried out in hospital, and she developed immediate rhinitis but delayed asthma reaction after almost 12 to 16 hours. I think her condition improved after transferring to another job. यहाँ 2 चीज़ें आप मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि ऑक्यूपेशनल मेडिसिन में जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है वो तो होती है, प्लस उसको मैनेज करना होता है कि उसको फर्दर एक्सपोजर से बताना, उसको सेव करना है। मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज, ऑलमोस्ट अप टू डे 22 to 50 एजेंट्स नॉन asthmogenic, every day coming new agents. So along with pharmacological treatment, management include removal of exposure and exposed, safe work practices and appropriate PPEs. ये उसकी पिक्चर थी, ये असल एक्चुअल पिक्चर नहीं है उसकी, तो सिमिलर आप देखते, यू कैन सी ऑन सैटरडे संडे इज बेटर, जो पीक फ्लो, एंड ऑन वीक डेज इट्स गोइंग डाउन. Case 3. 5% of electronic workers involved in microcomputer assembly complained of rashes on their wrists. You can see this band. So they apply this band के वो जो चूँकि इलेक्ट्रिक apparatus के साथ they are working with तो अर्थ होने के chances होते हैं, तो to protect from electric shock they have to wear a band. So they develop skin rashes. So when we went and we analyzed, the band was containing nickel. So that's why she got this contact dermatitis. So in this case, no antihistamine, no steroids, just you remove the band, you replace the band, and you can treat.
55-year-aged man seen at a medical clinic on many occasions for the past few months. For the complaint of giddiness, he gave history of being well before going to the work, and only developed giddiness since started working. Physical examination by attending physician on all occasions were normal. However, he insisted to have a medical certificate like we face in MASH. As he could not go to work, he was in fact diagnosed as a case of malingering. Whenever we don't find any proper diagnosis, we just label ये malingering कर रहा है. The patient was referred to occupational medicine clinic for the management of malingering. On occupational history, it was found he is working in a shipyard for the past 15 years. Each day he have to use considerable amount of organic solvent. ये जो शिप होता है ना, इसको क्लीन करना होता है इंजन को. सॉल्वेंट होते हैं जिसमें टॉलिन होती है मोस्टली, वो उससे क्लीन करते हैं. अब वो क्लोज्ड एरिया होता है, तो वो टॉलिन जो है, टॉलिन इज न्यूरोटॉक्सिक, टॉलिन इज हेपेटोटॉक्सिक, और भी बहुत सारे हैं इसके हैं. So over the past few months, he developed giddiness after decreasing job. This was the reason he reluctant to go to work. Further investigation show his symptoms were suggestive of chronic toxic encephalopathy due to organic solvents. So advise no further exposure, safe work practices, and good personal hygiene. 32 years female, 1 month history of stiffness and aching in neck, shoulder, feeling of tiredness in right arm with occasional numbness. On examination, tender trapezius, more on right side with tender of extensor muscle of forearm. There were pain in neck on the extreme lateral rotation and flexion. No neurological deficit. इसमें rather to examine the patient, we went to the workplace. We see the workplace. Workplace showed that he had to sit her neck bending forward and tilted to the left most of the time. So that's why she has strain on the right side. Her right arm was lifted off from the desk. वो उसने वो डालना होता था, वो जो मशीन होती है, वो टेलर मशीन जो होती है, तो ऐसे हवा में रहता था उसका बाजू. While her hand was touching the keyboard of the accounting machine, height of the desk was found to be too high for a chair, necessitating her overcoming, उसको ऊपर होके ऐसे काम करना था. So that was a repeated stress injury. So correct the work site, patient will automatically be treated. So no analgesia, no physiotherapy, no nothing required. ये last case है. Actually, this was the case who triggered the importance of occupational medicine and occupational health. Happened in Philadelphia. One index case is represented to the area physician with history of cough and hemoptysis, later diagnosis as lung cancer. So that particular guy, he told around 13-14 of other colleagues are having similar symptoms, and some of them already passed away. So that physician actually was very concerned. So he collected the data from the company, autopsies, and retrospectively he investigated. And it was found that just will collect exposure as well as the medical record of the 13 cases and made investigation from autopsies records. 14 cases, 12 have oat cell carcinoma and 1 squamous cell carcinoma and 1 unknown etiology. अब यहाँ देखें, वहाँ उसका जॉब क्या था, वो जो वहाँ को 150 के लोग करीब लोग थे, उनके प्रोसेस में जो एक
बहुत बड़ी कैटल थी, आप देख सकते हैं 3,800 लीटर। उसमें उन्होंने फॉर्मलिन, मेथनॉल, HCl ये मिक्स करके उसको गर्म करना होता था, तो उसमें से वेपर्स निकलते थे। अच्छा, वो वेपर्स इतने ज़्यादा होते थे कि एवरी डे दे हैव टू इवैक्यूएट मैनी टाइम दैट पर्टिकुलर एरिया। सो एंड ऑल दीज फॉर्मलिन, मेथनॉल, HCl, they are now confirmed type 1 carcinogens. So all those with oat cell carcinoma died within 20 months. So this case was actually this story, this happening, this incident triggered the importance of OH, especially in USA states. They are civilized log. So now occupational cancer, you can see so many chemicals and arsenic, nickel, polyaromatic hydrocarbon, coal tar, benzene, benzol, asbestos, radiation. So they can target skin, lungs, scrotum, bladder, pleura, peritoneum. And even there is one red cedar is linked with the nasopharyngioma, right, sir? Yeah. Worldwide estimated that 37% of the back pain, 60% of hearing loss, 13% COPD, 11 of asthma, 10 of injuries, 10 of lung cancer, 2 of the leukemias are work related. आप अगर इनको देखें हम COPD, asthma and lung, ये 13, 24, 30, 34 लंग्स आर जो है ना लंग्स पोर्शन वो 34 एटलीस्ट उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है जो वर्क रिलेटेड डिजीजेज है। 2.3 million people died from work related accident, 6,000 plus each day. So what do you think, more proportion with injuries or diseases? Any idea? Probably. 86% due to disease, 14% is only injuries. In UK, in 2004, 5,000 plus cases registered and 3,000 plus died in 2005. If we see the cost of job related injury and illness is 250 billion, which is 30 billion more than the cost of all cancers and 76 billion more than the cost of diabetes. So this cost, actually this cost totally is, we can save, Malaysia says the chemical cause 70% of occupational diseases. Okay, occupational disease is disease at work due to exposures, due to environment, due to hazards. Disease could be of three types: general, like diabetes, hypercholesterolemia; work related, the disease that trigger with the work; asthma, you can have asthma due to other reason, by your work exposure can trigger; and the third is occupational disease. There must be a temporal relationship, and the cause must be within the work site and must not be the outside work site, like asbestosis, silicosis. Characteristic इसके सिमिलर हैं, ट्रीटमेंट इज सेम लाइक यू पीपल आर डूइंग, हम लोग तो प्रिवेंशन पे ज़्यादा काम करते हैं. सो क्लिनिकल एंड पैथोलॉजिकल प्रेजेंटेशन सेम है. दिस कैन हैपन इवन after termination from the job. I can share you this asbestosis. It takes at least 2 decades time from the exposure to give a disease. So even after retirement, people can get sick due to work related. In development country, they by law they have to keep the record of all their employees for 30 years.
So, and they have a exit medical exam also at the time of retirement, if you are resigning the job. Clinical manifestation of as dose and time. So, big doses, small time, small doses, larger time, both can bring disasters. And also the other precipitating factor like cigarette smoking can increase occupational diseases. These are 5 major types of hazard that can cause disease. Could be noise, heat, radiation, temperature. These are under physical. So the noise, hearing loss, heat extreme, both high temperature, low temperature, frostbite and heat stroke. Then radiation, you know, is the radiation, chemical radiation, radioactive radiation, X-rays. So from skin injuries, mild skin injury to malignancies like leukemias, skin cancers. Biological, we all are exposed to biological hazards, and recently we face a lot of healthcare professionals, I think in thousands have gone in COVID era. So we catch this COVID from our patients. Then gases, dust, solvents, chemical hazards. Then psychosocial hazard is, I think this is number 1 nowadays, psychosocial, right? Long working hour, boss not happy, subordinate not available, कोई बात नहीं सुन रहा, कोई बात नहीं मान रहा, कोई मिल नहीं रहा, overwork, pay less, away from home, away from beloveds. तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के तो ये रहा, आई थिंक मैच ये रिकॉर्ड हो रहा है यार. ओके, ये आपसे मैंने करी दी हीट की. प्रेशर का, डिकम्प्रेशन सिंड्रोम, काइसन सिंड्रोम, राइट. सो जब जो वर्क करते हैं, जब डाइवर जाते हैं अंडर प्रेशर, तो बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता है, डीप इनसाइड बहुत हैवी प्रेशर होता है. वेल वो असेंड करते हैं तो एयर जो है ना वो बबल्स में चेंज हो सकती है, तो एयर एम्बोलिज्म डेवलप कर सकती है. Yeah, we have done this. Gases, dust में pneumoconiosis, asbestosis, bagases, ये जो गन्ने का शुगर केन का वो होता है, ये जो पावर जनरेशन के हैं, जो उनका रॉ स्टॉक होता है, शुगर केन और कोल. So coal can cause pneumoconiosis, sugar cane fiber can cause bagases. Then chemical cancers, dermatosis, we have already discussed. Now we come on to prevention. As in every case, there is primary, secondary, tertiary, and then after tertiary prevention, certain other liabilities with the physician. We'll discuss. Primary mein, you have to apply something to control the hazard. So when there is no hazard, no disease. Hazard into exposure is the risk. So hazard multiplied by exposure is 0, risk is 0. So उसमें जो usually जो use की जाती है hierarchy, उसमें first is eliminate at the first instance. उसको जैसे asbestos, बहुत सारे countries they have removed asbestos, no more using. Secondly, substitute. So change with the less potent chemical. For example, previously they were using chlorine. Now sodium hypochlorite. Chlorine, 100% chlorine, sodium hypochlorite is 65%, so less concentration. Then substitute needle stick injury. Now retractable needles are available. So you pull the syringe, so needle is automatically go up. So needle stick injury, the chances of needle stick injury very, very low. Engineering control, building design, good housekeeping, ventilation, उसको एक्सपोज कर दिया, इनक्लोज कर दिया जाए जो जहाँ से केमिकल निकल रहे हैं, आइसोलेट कर दिया. नॉइज़ है, अगर उसको आइसोलेट कर दें या कोई बैरियर लगा दें,
लोकल एग्जॉस्ट दे दें, पीपीज, प्रोटेक्टिव डिजाइन, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, तो ये सारे इंजीनियरिंग कंट्रोल में आते हैं। उसके बाद है बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग। नाउ वी कैन डिटेक्ट ससेप्टिबल एम्प्लॉइज, दिस पर्टिकुलर पर्सन कैन हैव दिस मेडिकल इशू। तो उसमें कुछ जीन मार्कर्स भी आ गए हैं, कुछ ब्लड के सैम्पलिंग्स हैं, मेटाबोलाइट्स हम देख लेते हैं। तो ये नाउ इट इज़ अवेलेबल। उसके बाद आ जाता है आपका सेकेंडरी। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने वो जो टॉक्सिकेंट्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, उनको आपने मेजर करना है। जैसे क्लोरीन है तो उसका फिनोल है, या टीटीएम में ये टेस्ट अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। लेड का ब्लड लेड अभी आपको वहाँ बताया, यूरिन अमीनो लेवलिनिक एसिड। सो ऑब्जेक्टिव है वी हैव टू पिक द एसिम्प्टोमेटिक person at the right time. In occupational diseases, there is no cure, no treatment. If we pick them at early stage, before symptoms develop, we can save them. ये हो गया। Third is curative and rehabilitation, removal from exposure and appropriate medical treatment. Like the case we discussed, lead poisoning. So first we have done removed. अब उसके चूँकि second is chelation for heavy metals, इसमें कुछ chemicals कुछ दिए जाते हैं जो bind करते हैं heavy metal के साथ, तो body से उसको excrete करते हैं। जो केस हमारा जो lead poison का वो अर्ली डिस्कस किया, उसमें 400 और हर केमिकल का एक गाइडलाइन स्टैब्लिश्ड है, किस लेवल पे क्या डिसीजन करना है। तो लेड में अमूमन ये होता है कि इफ़ द लेड लेवल ब्लड लेवल इज़ 800 एंड अबव, उसको रिमूव किया जाता है। इफ़ 500 to 800 टेम्परेरी सस्पेंड किया जाता है। तो अनटिल अनलेस कि वो रीडिंग जो है उसकी बैक टू नॉर्मल ना हो जाए। लेड में और भी थोड़ा सा होता है कि ब्लड लेड लेवल इज़ नॉट ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द लेड पॉइजनिंग, तो ये जाके बोन्स में डिपॉजिट करता है। तो देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज नोटिफिकेशन। वंस यू हैव डन प्राइमरी, सेकेंडरी, यू हैव ट्रीटेड, द OS disease must be notified at least within MASH if you find anywhere, particularly our employees, for our employees। कोई भी कहीं भी आपको ज़रा सा भी वो होता है कि ये लिंक करती है किसी एक्सपोजर के साथ, तो प्लीज़ टेल अस। वी विल डू एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, वी विल डू वर्क साइट विजिट, वी विल एग्जामिन दैट केस, और जो रिकमेंडेशन दे सकते हैं उसमें वो हम लोग लेके आएंगे आपके लिए। उसके बाद होता है इसका कंपनसेशन का। बहुत सारे कंट्रीज़ में तो लॉ है कि जो जितना लॉस उसको कैलकुलेट किया जाता है, जितना परसेंट है उसी हिसाब से उसको पेमेंट होती है। अगला स्टेप होता है उसको रिहेबिलिटेट करना। अब इंजरी हुई है, कोई लेम इंजरी हुई है, तो उसका कोई पहले जॉब ड्राइविंग का था, तो आप ही कैन नॉट वर्क एज अ ड्राइवर, तो उसको फिर किसी और जॉब पे डालना। इसी तरह कोई फॉर एग्जांपल अस्थमा का केसेस है, तो आप यहाँ बैठे हैं सारे फिजिशियन, तो अगर कोई किसी को अस्थमा है किसी भी केमिकल से, तो नेक्स्ट टाइम उसका माइन्यूट एक्सपोजर जो है वो भी ट्रिगर कर देगा उसकी सिम्टम्स को। तो इन दैट केस उसको फिर किसी और जॉब में मूव करना होता है। फिर काउंसलिंग है। आफ्टर दैट इज रिसर्च, क्योंकि इस ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के लिए जो वट एवर द केमिकल्स ये काउंटलेस हैं, नो फिजिशियन कैन मेमोराइज। और सेकेंडली एवरी डे न्यू इफेक्ट, न्यू ट्रीटमेंट वेज, न्यू एवेल्युएशन वेज, तो कंटिन्यूसली उसको अपडेट रहना चाहिए ऑक्यूपेशनल फिजिशियन। वैसे हम सब फिजिशियन को रहना चाहिए तो देन all we can do if we have a good legislation. So ji, that's all. Take home message is all old diseases are preventable if detected early, can treat. $1 million question for physician.
कोई भी आपके पास वर्किंग एज का या वर्किंग पेशेंट आता है, आस्क वन क्वेश्चन, व्हाट इज योर प्रोफेशन, व्हाट आर द एक्सपोजर्स, गेट द ड्यूरेशन, दैट्स ऑल. थैंक यू.